Okay, and only one blue jay is there which remains the same. There is one blue jay. Blue jay is a type of bird. जैसे peacock होता है या फिर swan होता है. Blue jay is also type of a bird. So only one blue jay, a bird, it remains the same. It does not change color. So now people are amazed by it. People are afraid of it. People are shocked कि ऐसे क्यों हुआ. सब लोग surprised हैं और कुछ लोग डर रहे हैं इस चीज से कि कुछ कहीं बीमारी तो नहीं हो गई है. कुछ लोगों को डर लग रहा है कि हमारी आंखों के साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गई है. Some people are thinking that are if they are in a dream, कहीं कोई वो सपना तो नहीं देख रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं या सच में ऐसा कुछ हुआ है पूरे वर्ल्ड के साथ में. So how people are reacting to it? People are amazed and people are shocked and they are having discussions, debates. लोग उसके बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हैं अखबार के अंदर. उस पर न्यूज छप रही है पूरे टाइम की वर्ल्ड पर्पल हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या सोल्यूशन है. एंड न्यूज बन रही है इसके ऊपर, मूवी बन रही है इसके ऊपर. सो the whole discussion in the world is all about the world getting violent. पूरी दुनिया में बस बात ही क्या चल रही है कि वर्ल्ड वायलेट कैसे हो गया. Now, exactly what happens after the 1 year? After 1 year, the world turns yellow. So when all the things, the trees, the cars, the plates, the utensils, the skin of people, the food which they were eating, everything turned violet 1 year before. And exactly 1 year after, what happens? The world turns yellow. वही सारी चीजें जो पहले वायलेट हो गई थी, अब वही सारी चीजें येलो कलर की हो गई, सारी की सारी चीजें. ठीक है, फिर एक साल बाद ये ऑरेंज कलर की हो गई, फिर एक साल बाद सारी चीजें पिंक कलर की हो गई. बट फिर भी जो ब्लू जे था वो सेम रहा. जब भी वर्ल्ड पूरा येलो हुआ, पूरा वर्ल्ड ऑरेंज हुआ, पिंक हुआ, बट द ब्लू जे रिमेन द सेम. द ब्लू जे डिड नॉट चेंज इट्स कलर. ओके, सो उसके एक साल बाद क्या हुआ? द ब्लू जे जो है वो अब अभी भी उसने चेंज नहीं किया है कलर, लेकिन एक साल बाद क्या हुआ? द होल वर्ल्ड टर्न ब्लू. So the blue jay was also of blue color and the whole world has also turned of blue color. So अब पूरी दुनिया एक ही कलर की हो गई है. पहले तो दुनिया दो कलर की थी, एक तो ब्लू जे का कलर ब्लू और दुनिया का कलर वायलेट, या फिर दुनिया का कलर येलो या ऑरेंज या पिंक, लेकिन ब्लू जे का कलर ब्लू. दो कलर थे. बट नाउ एज द वर्ल्ड हैड टर्न ब्लू, देयर आर नॉट टू कलर्स एनीमोर इन द वर्ल्ड. अब दुनिया में दो कलर नहीं बचे, पूरी दुनिया में एक ही कलर हो गया, ब्लू. So earlier, blue jay was of very, very importance, very much important. Blue jay was, लोग उसको देखने आ रहे थे दूर दूर से, उसको देखने के लिए लाइंस लग रही थी. But now the blue jay is also the same color as the world is. The blue jay has not remained important at all. जब ब्लू जे भी अब दुनिया के कलर का हो गया है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं बचा. ठीक है, अब वो भी इम्पोर्टेंट नहीं बचा, तो लोगों ने क्या किया? उसको खुला छोड़ दिया. पहले तो उन्होंने लोगों ने उसको पकड़ के रखा था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसने कलर कैसे नहीं चेंज किया, तो लोगों ने उसको केज में पकड़ के रख दिया था. बट वंस द ब्लू जे कलर ब्लू एंड द वर्ल्ड ऑल्सो टर्न ब्लू and the whole world was of one color only, that is blue color, people set the bird free. लोगों ने ब्लू जे को किसी ने उड़ा दिया. एंड अगली मॉर्निंग क्या हुआ? द वर्ल्ड रीगेन्ड इट्स ट्रू कलर्स. वर्ल्ड के अंदर सारे सारे कलर जो पहले से थे, वापस वही के वही कलर्स आ गए. जो चीज जैसे कलर की थी, प्लांट्स ग्रीन कलर के थे, वुड ब्राउन कलर की थी, तो सारे कलर्स जो अनगिनत कलर्स हैं दुनिया में, वो सारे वापस आ गए. एंड द वर्ल्ड बिकेम ब्यूटिफुल अगेन. Okay, so summary of the chapter is complete, and now I had given you this assignment. Okay, one assignment was given to you. These three questions were given to you as assignment. Okay, these three questions. So why did the scientists gather at a place? The scientists gather at a place to discuss about the color of blue jay. लोग क्यों gather हुए? कि उसका blue jay का color discuss करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, which color was more important of two colors? जो दो कलर्स थे, हमेशा दो कलर्स कौन से रहते वर्ल्ड के अंदर? एक तो ब्लू जे का कलर और दूसरा कलर कौन सा जो वर्ल्ड का कलर हो रहा था? पर्पल, वायलेट, पिंक, ऑरेंज, येलो, व्हाटएवर इट वाज. सो which color of more important was more important? The color of blue jay was more important because बाकी सारी चीजें एक ही कलर की थी, लेकिन ब्लू जे डिफरेंट कलर का था. So that's why the color of blue jay was more important, because the whole world was of one color only,
but the color of blue jay was always the same, and that's why the color of blue jay remained more important than the other colors. Okay, question number 3. How did people talk about blue jay? अब लोग blue jay के बारे में कैसे बात कर रहे थे? Who will answer this question? How were people talking about blue jay? Yes, I want the question from, I want the answer. Let's move towards the, why am I, wait, huh? Okay, so let's take out the questions from the exercise. Okay, so why did the people lose interest in the bird? लोगों का bird के अंदर interest क्यों छूट गया था? The people lost interest in the bird because the blue jay was a color like everybody and everything else. लोगों का अब जब the whole world turned blue, now the people lost interest in the bird. Why? Because the blue jay was also of the same color as the bird was. Blue jay भी blue color का, bird भी blue color का, so the people lost interest in him. Question number 2. Who released the bird from the cage? So some person, कोई भी एक आदमी था, उसने क्या किया? Blue jay को केज से छोड़ दिया, पिंजरे से रिलीज कर दिया. And why did he release the bird? उसने blue jay को क्यों छोड़ दिया? Because वो अब important नहीं रहा था. Because world भी blue color का हो गया, blue jay भी blue color का हो गया. So he was not important anymore. Question number 3. What did people forget and why? लोग क्या भूल गए थे और क्यों भूल गए थे? What did people forget? that people forgot कि एक बार जो वर्ल्ड है वो ब्लू कलर का हुआ था, एक बार येलो हुआ था, ऑरेंज हुआ था, ये सब जो है लोग भूल गए थे. एंड they forgot everything because, और ऐसा क्यों भूले थे, वो सब कुछ भूल क्यों गए थे? Because the world had again regained its color and world had again regained its all the colors and लोग, इसलिए लोगों को लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, वापस सब कुछ पहले जैसा हो गया, तो लोग भूल गए. जैसे भी कोरोना चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी कोरोना चल रहा है, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, सबको न्यूज में भी कोरोना, न्यूज़पेपर्स में भी कोरोना, टीवी कोरोना, सब कुछ कोरोना कोरोना की बात हो रही है. बट जब कुछ टाइम बाद, लेट्स होप, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, देन पीपल विल अगेन, व्हाट विल बी दे डूइंग? सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ. क्यों? क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो अब दे विल फॉरगेट एवरीथिंग. अभी सबको लोगों को कोरोना बहुत दिमाग में चल रहा है, बट व्हेन द वर्ल्ड विल बी सेम एज बिफोर, people will start forgetting about corona or any other problem or any other calamity. जो भी चीज होती है लोग भूल जाते हैं. Okay, so let's move towards the tick the correct answers. The one thing that did not turn violet was, so which thing did not turn violet? There was one thing which did not change its color, and it was the blue jay. So the blue jay did not change its color. Okay, question number 2. Scientists analyzed, did tests and wrote articles. Scientists ने क्या किया? Analysis किए, experiment किया, test किए, and said that, लोगों ने, scientists ने क्या कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने रीजन क्या दिया? वो कोई रीजन नहीं दे पाए. साइंटिस्ट जो है, कितना इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, कितना इन्होंने टेस्ट कर लिए, बट दे कुड नॉट गिव द रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड टर्निंग वायलेट. वर्ल्ड वायलेट क्यों हो रहा था, ये उसका रीजन नहीं दे पाए. सो द answer for question number 2 is D, that they could not find no reason to explain the change. They could not find any reason to explain the change. कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो reason नहीं बता पाए. Okay, so question number 3. 1 year after the world turned violet, एक साल बाद क्या हुआ? जब वर्ल्ड वायलेट हुआ, उसके एक साल बाद क्या हुआ? The world turned yellow. Okay, so the world turned yellow. So answer for question number 3 is the world turned yellow. So you keep marking these questions in your books, okay? Question number 4. But on occasion, people wondered where the blue jay had gone. So now people kept forgetting about that कभी ऐसा हुआ था, world violet हुआ था, yellow हुआ था, pink हुआ था, ये सब तो लोग भूल गए. लेकिन कभी कभी उनको क्या ध्यान में आता था कि वो blue jay कहाँ है, कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो blue jay के बारे में फिर भी थोड़ा थोड़ा याद करते थे. So the people kept wondering where the blue jay was, कि blue jay कहाँ गया, they used to wonder. Okay, so let's move towards the fill in the blanks questions. So everything turned violet. Everything means everything in the world turned violet, from tallest skyscrapers to the tiniest ant. Okay, so सबसे
जो tallest skyscrapers थे. So what is the meaning of skyscrapers? Who will answer me? What is the meaning of skyscraper? जो girls थे उन्हें situation कैसी लगी? Girls जो थे उन्हें situation कैसी लगी? Yucky लगे. They did not like the situation. And boys thought what? Boys को situation कैसी लगी? Answer me, faster. What did boys think about the situation? Okay, Jitmanyu is again raising his hand. Jitmanyu has answered questions, so I want answer from other people also. Amni, I'm unmuting you. Where is Amni? Amni Sharma, I'm unmuting you, okay? Yeah. Wait, yeah. Ma'am, boys thought that it is cool. Yeah, good. So boys Ma'am, thought that it is cool. Good. So boys thought It that is cool. that was cool. Boys को लगा कि बहुत cool है ये, सब कुछ एक कलर का हो गया, and girls found it yucky. Okay. And the next one, the smartest scientist in the world gathered to figure out. So अब ये problem का solution निकालने के लिए कौन इकट्ठा हुआ? The smartest of the scientists. सबसे smart scientist जो है वो इकट्ठा हुए problem का solution निकालने के लिए. Next one, everywhere people discussed and argued about the dash of the importance or unimportance of the color violet. जो पूरे दुनिया का violet हो जाना था, what did it became? It became an issue. ये पूरा एक सारा issue बन गया, okay? So लोग किस बारे में discuss कर रहे थे? About the issue of colors, about the issue of importance और unimportance of violet color. लोग पूरे time इसी issue के बारे में बात कर रहे थे. So answer for the fourth one is issue. Okay. Okay, next one. Next one is the very next morning, the world regained its rainbow of colors as if nothing had ever happened. So अगले दिन ये सब कब हुआ? अगले दिन the world regained its rainbow of colors as if nothing had ever happened. So when did it happen? ये सब कब हुआ? World ने अपना rainbow of colors regain कब कर लिया? Answer me. When did the world regain its rainbow of colors? People sat around looking at one another, wondering if they were dreaming. लोगों को लगने लगा कि क्या वो सपना देख रहे हैं? That is true. लोगों को लगने लगा कि सारी दुनिया एक कलर की कैसे हो गई? वो सपना तो नहीं देख रहे हैं. So it's a true. Second one, even candy bars had turned all black as had chips and chocolates. सारी candies जो हैं वो भी black color की हो गई. Chips, chocolates सब कुछ black color का हो गया. तो सब कुछ black color का कभी हुआ क्या? No, right? So that's a false. सब कुछ black color का कभी भी नहीं हुआ. That's a false. सब कुछ दूसरे colors का हुआ था. Violet, yellow, pink. Who is he who's speaking? And I have unmuted that person. Okay, okay, I have unmuted Parth by mistake. So yeah, so the सारी जो दुनिया थी, सारे चिप्स, कैंडीज, बार्स, चॉकलेट, सब कुछ जो है वो ब्लैक कलर का नहीं हुआ था. वो वायलेट, येलो, पिंक, दूसरे दूसरे कलर्स का हुआ था, बट ब्लैक कलर का कभी कुछ नहीं हुआ. So that's a false. Okay, question number 2 is a false. Next one, the feathers of blue jay became big issue. So blue jay के जो पंख हैं वो बड़ा इशू बन गए थे. ब्लू जे के पंख कभी बड़ा इशू नहीं बने. बड़ा इशू क्या बन गया था? द कलर ऑफ ब्लू जे. सो द इफ यहाँ पे ऐसा लिखा होता द कलर ऑफ ब्लू जे बिकेम अ बिग इशू, देन इट वुड हैव बीन ट्रू. तब ये ट्रू होता. बट यहाँ पे हमको क्या लिखा है क्वेश्चन में कि उसके ब्लू जे के फेदर्स जो हैं, पंख हैं, दे बिकेम अ बिग इशू, देन इट्स अ फॉल्स. ब्लू जे के फेदर्स इशू नहीं हो गए थे. ब्लू जे का जो कलर है वो इशू बन गया था. नेक्स्ट वन, The world had once turned yellow, then orange, then pink, then blue. तो इसी सीक्वेंस में हुआ था. पहले येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, पिंक हुआ, then blue हुआ. Right, that the sequence is correct. So you have to remember the sequence also कि पहले ऑरेंज हुआ था या येलो हुआ था या ब्लू हुआ था या पिंक हुआ था. Okay, so you have to remember the sequence. कि सबसे पहले येलो हुआ, फिर ऑरेंज, then pink, and then blue. Okay, so that's a true one. Kush, you are again raising your hand. I have not asked any question अभी ना. जब मैं आपको question पूछूंगी, then you raise your hand. Okay. Kush, just lower down your hand. Next one. It is a story about the day when everything in the world slightly changed into red color. So ये story किस बारे में है
कि पूरी दुनिया रेड हो गई थी उस बारे में? नो, सो दैट्स अ फॉल्स. हम यहाँ कभी रेड कलर की तो बात ही नहीं की. इट इज अ स्टोरी अबाउट द डे व्हेन द होल वर्ल्ड टर्न वायलेट. जब पूरी पूरी दुनिया वायलेट कलर की हो गई थी, ये स्टोरी इस बारे में है. ओके, सो दैट्स अ फॉल्स वन. Okay, children. So now let's move towards the summary of the lesson. So I want the summary from you people. Who will answer this question? The summary of the lesson. We have discussed the summary so many times, and I want the summary from you only. Okay, so just answer the summary of the lesson. Who will answer the summary of the lesson? Anyone from you? I want the summary from you faster. Okay, Kush is again raising his hand. Avni has also answered one question. I want answer from other people as well. हर बार यही कि यही बच्चे नहीं आंसर करेंगे question. You others also have to answer this question. Others, answer me the question. And now let's move towards the other questions. You make a list of what had happened with all the people of the world and what was the center of attraction. So you have to make the list कि क्या क्या हुआ, लोगों के साथ क्या क्या हुआ. ओके, लोग अलग अलग लोगों के साथ क्या क्या हुआ जब वर्ल्ड वायलेट कलर का हो गया, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था. The center of attraction was the blue jay, which had not changed its color. And you have to make a list of what had happened with all the people of the world. कि अलग अलग लोगों के साथ क्या क्या हुआ. So what had happened? सारी फैमिलीज जो हैं वो ब्लू वायलेट कलर की हो गई. मूवी स्टार्स जो हैं वो वायलेट कलर के हो गए. डॉक्टर्स वो भी वायलेट कलर के हो गए. क्वीन ऑफ इंग्लैंड, प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक. सो सब कुछ क्या हुआ, लोग अलग अलग लोगों के साथ क्या हुआ, अलग अलग लोग थे. चाहे कोई बहुत अमीर था, बहुत गरीब था, बहुत फेमस था, बिल्कुल फेमस नहीं था, बट सारी चीजें जो है वायलेट कलर की हो गई. So how people reacted to it? People were shocked, people were amazed, some were afraid of the situation कि ऐसा क्यों हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा वर्ल्ड के साथ, and some thought it was funny. And the boys thought that it was cool, and the girls found the situation very yucky. Girls को situation बहुत yucky लगी, and the boys thought that it was cool. So आपको ऐसे, this is just an example. You have to keep writing how the other people felt when the world turned violet. कि लोग अलग अलग लोगों ने कैसे कैसे रिएक्ट किया. साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कशंस किए, डिबेट किए, लोगों ने क्लब ज्वाइन किए. सो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस. ओके, कि अलग अलग लोगों ने कैसे कैसे रिएक्ट किया और अलग अलग लोगों के साथ क्या क्या हुआ. अब लोग जो है वो इडियम्स नहीं यूज कर रहे थे, प्रोवर्ब्स नहीं यूज कर रहे थे, जैसे कि ग्रीन विद एनवी या फिर ग्रीन थंब, ये सब यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया में अब एक ही कलर था, ब्लू. ओके, sorry, violet. Yeah. So, okay, this question. Imagine you were in such a world. How would you react? So, you have to imagine that you were in such a world. कौन से world में जब सारी चीजें एक कलर की है, how would you react? Okay, so you have to answer this question. Imagine that you were in a world where all the things are of one color only. So, how would you react to that? आपको ऐसी दुनिया में ऐसा react करना है जैसे जो अभी इस चैप्टर में जो पूरा लेसन में जो हमें दुनिया बताई है कि ब्लू जे है एक ही कलर का, एक डिफरेंट कलर का, बाकी पूरी दुनिया सेम कलर की है. सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि आप कैसे रिएक्ट करती अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो. या आंसर चिल्ड्रन. Okay, Kush is again raising his hand. Kush, you have already answered. Akriti has already answered. Priyanshi, you are not visible to me, dear. Just turn on your camera. Priyanshi Srivastav. Okay, Priyanshi. Okay, Priyanshi, I'm unmuting you. Yeah, Priyanshi, I've unmuted you. Answer. Okay, Priyanshi is not visible again. Others, Kush, Shamni, you have already answered. Akriti has already answered. Priyanshi, you're not visible to me, dear. Priyanshi is also raising her hand, but she is not visible. Okay, Priyanshi, I'm trying to unmute you again, okay? Try answering. Yeah, Priyanshi. If I was in world, I wouldn't amazed to see that we enjoy. It was amazing, but I would also start finding that why did the color change into violet, blue, yellow, and pink? If I would Yeah. have been other, that I would take the
I would take Okay, the Priyanshi, why one did one the thing, color huh? change? सुनो Priyanshi, just put down your book and try answering. अभी मेरी तरफ देखो and just try answering. अपने मर्जी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लैंग्वेज गलत है नहीं है. Just try answering in your own language, okay? कि आप ऐसी दुनिया में होते तो If आप क्या I करते? if I was Try. in the world, if I was in the world, I will be enjoying that the world, and I will also find why did the color change in pink, blue, Yeah. red, yellow. Yeah, आप It ये भी is so try करने का amazing to find see करते. that. It is amazing It to is see so that, and amazing to you will also try to find that out that where the color comes. कि और ब्लू जे के बारे में आपके क्या थॉट्स होते? ब्लू जे को देख के आपको कैसा लगता? I will amazed to see them, and I will amazed to see the world. एंड हाउ अबाउट ब्लू जे? ब्लू जे ने एक ही चीज है जिसने कलर चेंज नहीं किया है, उसको देख के आपको कैसा फील होता? Okay, Priyanshi, you have answered this question. Others, you answer this question that आपको ब्लू जे को देख के कैसा लगता? Good, Priyanshi. Okay. Others, answer this question that how would you react जहाँ पे ब्लू जे जिसने कलर चेंज नहीं किया है, how would you react to that? आपका रिएक्शन कैसा होता? आप वहां पे उस दुनिया में हो जहाँ पे ब्लू जे ने कलर चेंज नहीं किया है, बाकी सबने कलर चेंज कर लिया है. So how would you react to that? Akriti has answered, Kush has answered, Karthik has answered. Others also raise your hand and answer me the question. Again and again, only these children are not going to answer the question. I want the answer from other people as well. Okay, so others also try answering. कोई इशू नहीं है dear, अगर कोई किसी ने थोड़ा लैंग्वेज गलत हुआ, सलत हुआ, it's all okay. You just have to answer. You just have to try answering. Jitmanyu has also already answered. Jitmanyu has or has not? Jitmanyu has already answered. Others, okay, I will pick some. Okay, Dhruv Raj. Okay, Dhruv Raj, I'm unmuting you. Okay. Yeah, Dhruv Raj. Ma'am, ma'am, when I see the blue jay in the world, ma'am, it was amazing to see the blue jay. और आपको कैसा लगता? मैम अमेजिंग कूल लगता मैम, क्योंकि आप भी उसको देखने लाइन में लगते? नो मैम, मैं तो दूर से देख लेता. दूर से दिख जाता? इतने लोग खड़े उसको देखने के लिए लाइन के अंदर, आप दूर से देख लेते? So it would be so amazing to see that blue jay has not changed color, and I will also stand in the queue to see the blue jay. इतने पूरी दुनिया से लोग आए हैं उसको देखने के लिए, तो मैं भी उसको देखने के लिए लाइन में लगती कि ये ऐसे कौन सी बर्ड है, ऐसा कौन सा स्पेशल क्रिएचर है जिसने कलर चेंज नहीं किया. Okay, anything else, Dhruv? Anything else about the blue jay and this thing, or anything about the purple color world, anything about the violet color world? आपको कैसा लगता ऐसे वर्ल्ड को देख के? उस वर्ल्ड में आप कैसे रिएक्ट करते? Yes, Dhruv, your voice is not audible here. Wait, Dhruv. Ma'am. Yeah. It was amazing to see the world in violent red, pink, yellow color. It was amazing, cool to see the world. Yeah, good, okay. Yeah. So, children, okay, we have completed the chapter, and also I request कल से हम क्या करेंगे? हम रिविजन करेंगे. आपके हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, so we will be revising the other chapters which we have not done. आपको सिलेबस पता चल जाएगा कुछ दिन में कि आपका सिलेबस कहाँ से कहाँ तक आना है. बट अब से हम चैप्टर्स रिवाइज करें. इसके आगे अभी हम नया चैप्टर नहीं करेंगे, अभी हम रिवाइज करेंगे जो प्रीवियस चैप्टर्स है वो. ओके, anyone has anything to ask? I guess the class is going to end. Karthik wants to ask something. Karthik,